Hello everyone and welcome to another video of the फटाफट रिविजन सीरीज जिसमें हम लोग 30 या 30 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं विद इन 15 मिनट्स ताकि हमारा क्विक क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो पाए फॉर नीट एग्ज़ाम। एंड इस वीडियो का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे रिलेटेड MCQs हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन and now let's begin to practice. So the first question and यहाँ पे हमारा first question ही एक star question है. The thick filament यानी कि myosin filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called. तो यहाँ fibrous membrane का नाम पूछ रहा है. यहाँ डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि this is the A band and this is the thick filament यानी कि myosin filament. And myosin filament यहाँ पे बीच में एक पतला सा fibrous band से उसको हेल्ड करके रखता है. दैट इज़ कॉल्ड द एम लाइन. और यहाँ पे एम लाइन इस डायग्राम में हम लोग क्लियरली विजिबल देख सकते हैं. देखो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज द एम लाइन. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, एम लाइन. नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ मायोसिन विच हैज़ एक्टिन बाइंडिंग साइट इज इंक्लूडेड इन. तो ये मायोसिन है, मायोसिन के हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है. सो दिस इज द हेवी मीरोमायोसिन. सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 2, हेवी मीरोमायोसिन. नेक्स्ट, इन अ मोटर यूनिट देयर इज जंक्शन बिटवीन. तो मोटर यूनिट में एक मोटर न्यूरॉन उस पर्टिकुलर एरिया के मैनी मसल फाइबर्स को कंट्रोल कर रहा होता है. सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 2, a motor neuron with many muscle fibers. Next, choose the correct pair. So stapes, smallest bone in the external ear. This is wrong. Stapes is the smallest bone but it is in the internal ear, not external ear. Sella turcica in sphenoid bone. This is true. Sella turcica is a depression in the sphenoid bone जहाँ पे pituitary gland situated होता है. Next two options are also wrong. So correct pair is option number 2. नेक्स्ट, द अनपेयर्ड फेशियल बोन्स आर. तो फेशियल बोन्स में अनपेयर्ड बोन्स आर वोमर एंड मैंडाइबल. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोजोआ इन ह्यूमंस. तो स्पर्म्स के पास टेल होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लैजिला. तो यहाँ पे स्पर्म्स क्या करते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट शो करते हैं. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, इंडिविजुअल मसल बंडल्स इज नोन एज ए. तो इंडिविजुअल मसल के बंडल को बोलते हैं fascicle एंड many bundles are held together by a collagenous sheath of connective tissue are called. अब many muscle bundles को एक collagenous sheath में ऐसे enclose कर लेंगे तो this is called fascia. So correct is option number 4. Next, intercalated disc is a characteristic feature of which type of muscle fibers. तो intercalated disc होते हैं सिर्फ और सिर्फ cardiac muscles में. So it is the characteristic feature of cardiac muscles. So correct is option number 4. Next, among the following proteins, how many are present in the I band and H zone respectively? तो वापस से डायग्राम पे आते हैं. This is the I band and यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है यानी A एक्टिन एंड H जोन ये वाला है. एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, मायोसिन. एंड वापस से अब क्वेश्चन पे चलते हैं. आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है और एक्टिन के कंपोनेंट्स यहाँ पे है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड एफ एक्टिन. तो आई बैंड के लिए 3 एंड H जोन में सिर्फ मायोसिन है एंड उसके कंपोनेंट है मीरोमायोसिन. तो इसके लिए सिर्फ 1. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक स्टार बनाना तो बनता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हैज़ ATPase एक्टिविटी. तो सेम यहाँ पे हैवी मीरोमायोसिन जो है यानी मायोसिन का हेड, यहाँ पे जहाँ पे एक्टिन बाइंड करता है वहीं पे ATPase एक्टिविटी प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 3, हैवी मीरोमायोसिन. नेक्स्ट,
Which of the following events leads to the breakdown of cross bridges during muscle contraction? तो यहाँ क्रॉस ब्रिजेस के ब्रेकडाउन का बात हो रहा है. क्रॉस ब्रिजेस क्या होता है? ये मायोसिन का हेड इस तरह से एक्टिन से बाइंड किया हुआ है और जब यहाँ पे न्यू एटीपी आके बाइंड करता है तब ये क्रॉस ब्रिज जाके ब्रेक करता है. तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 3. बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड विथ अ न्यू एटीपी लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन द Ca2 प्लस आयंस. तो रिलैक्सेशन के टाइम पे मसल जब रिलैक्स करता है तो कैल्शियम आयंस आर एक्टिवली पम्प्ड इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट, now this is a star question and very important question. Which of the following statement is true regarding all or none principle? तो all or none principle is related to the threshold stimulus of muscle contraction, यानी कि एक particular stimulus का threshold में muscle जो है वो अपना फुल स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड उसके बाद जितना भी स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा. तो अब देखते हैं. All stimuli irrespective of their strength can cause contraction of muscle. तो all stimuli नहीं, एक particular threshold stimuli होना ही चाहिए. So this is wrong. By increasing the strength of stimulus, strength of muscle fibers contraction increases. So this is also wrong. All stimuli which are above the threshold level will cause maximum contraction of the muscle. So this statement is true. So true is option number 3. Next, a single isolated contraction of a muscle fibers is known as. तो single isolated contraction को बोला जाता है twitch. So correct is option number 1. Next, now this is also a star question and important question, that rigor mortis is caused due to. तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है तो उसके बॉडी में एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिनिन का लेवल घटता जाता है एंड जो भी उसका मसल कॉन्ट्रैक्टेड हुआ होगा तो उसमें क्रॉस ब्रिजेस होंगे वो सस्टेन रहते हैं, यानी बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं. तो दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन यानी रिगर मोर्टिस. तो अब ऑप्शन देखते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, दिस इज रॉन्ग. ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाता इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है. लैक ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिनिन, दिस इज ट्रू. And sustained cross bridges between actin and myosin, this is also true. So both 2 and 3 are true. So correct is option number 4. Next, which of the following disorders is characterized by rapid spasm in muscles due to lack of Ca2 plus ions in body fluid? कैल्शियम का लेवल जब बॉडी फ्लूइड में घटता है तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स दैट इज स्पैज्म कॉज होता है एंड दैट इज नोन एज टिटनी. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1. एंड इसी टिटनी का लैंग्वेज चेंज करके एक और क्वेश्चन आता है वो हम लोग आगे देखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the correct option regarding the number of bones present in given part of axial or axial skeleton. तो स्कल में होते हैं 29 बोन्स एंड वर्टेब्रल कॉलम में 26 एंड रिब्स होते हैं 12 पेयर्स दैट इज 24 बोन्स एंड एक स्टर्नम दैट इज 24 प्लस 1. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज ऑल्सो अ नाइस स्टार क्वेश्चन क्योंकि इसका नेम से पूछ लिया जाता है. एसिटाब्यूलम इज, तो एसिटाब्यूलम इज द डिप्रेशन इन पेल्विक गर्डल जहाँ पे फीमर का हेड जुड़ता है जाके. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1, अ डिप्रेशन इन पेल्विक गर्डल विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हैंड? तो ह्यूमन हैंड में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं जो कि पाम बोन्स बोलते हैं इनको, पाम के बोन्स. एंड उसके बाद 14 फैलेंजेस होते हैं जो हमारे 5 फिंगर्स में होते हैं. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट. नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्टार क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लोअर लिम्ब का डायग्राम दिया है. नाउ विच ऑफ द लेबल पार्ट्स डिनोट्स टिबिया, फिबुला एंड मेटाटार्सल्स रिस्पेक्टिवली? तो टिबिया क्या होता है? यहाँ थंब के साइड वाला होता है तो D इज टिबिया एंड उसके बगल वाला इज फिबुला दैट इज E एंड G जो है दैट इज मेटाटार्सल्स.
F is tarsals, G is metatarsals and H is phalanges. तो यहाँ पे correct option will be option number 1, that D denotes tibia, E is fibula and G is metatarsals respectively. Next question. Match the types of joints in column 1 with their examples given in column 2 and choose the correct option. तो ball and socket joint is present between humerus and pectoral girdle. Pivot joint is between atlas and axis. Hinge joint is between the knee joint. And gliding joint is between the tarsals. So correct match is option number 1. Next, the movable bones present in head region are. तो जो बोन्स को मूव कर सकते हैं दैट इज़ द लोअर जॉ, दैट इज़ मैंडाइबल एंड अंदर के ईयर ऑसिकल्स दैट ऑल्सो मूव्स एंड वाइब्रेट्स. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट मैंडाइबल्स एंड ईयर ऑसिकल्स आर मूवेबल बोन्स इन द हेड रीजन. नेक्स्ट, ग्लिनॉइड कैविटी इज. नाउ दिस इज ऑल्सो स्टार क्वेश्चन जस्ट लाइक एसिटाब्यूरम, क्योंकि इसका भी नेम से पूछा जाता है. तो ग्लिनॉइड कैविटी एक पेक्टोरल गर्डल का डिप्रेशन है जहाँ पे हमारे हाथ का बोन ह्यूमरस जाके ज्वाइन करता है एंड शोल्डर जॉइंट को फॉर्म करता है. सो इट इज़ अ डिप्रेशन ऑफ पेक्टोरल गर्डल विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस. करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस्ड एक्सेप्ट. तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड दैट इज एनिसोट्रोपिक बैंड उसका लेंथ चेंज नहीं होता है. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2. बाकी जो एच जोन है, आई बैंड है एंड सार्कोमियर सारे का ओवरऑल लेंथ शॉर्ट हो जाता है, बट ए बैंड का लेंथ जो है वो चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट, द ह्यूमन स्कल हैज़ 22 बोन्स विथ डैश क्रेनियल बोन्स एंड डैश फेशियल बोन्स. तो क्रेनियल बोन का नंबर होता है 8 एंड फेशियल बोन्स आर 14. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकैल्सीमिया में लीड टू. तो बोला था कि टिटनी का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज चेंज करके आता है. तो हाइपोकैल्सीमिया इज लो लेवल ऑफ कैल्शियम दैट इज लो Ca2+ एंड इससे होता है रैपिड स्पैज्म इन द मसल्स दैट इज टिटनी. सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4. Next question, which of the following joints would allow no movement? तो no movement होता है fibrous joints में. So correct is option number 1. Next, the pivot joint between atlas and axis is a type of. So pivot joint is a type of synovial joint. So correct is option C. Next, in human body, which one of the following is anatomically correct? So floating ribs are 2 in pairs, this is true. Collar bones 3 pairs, this is wrong. Collar bone 1 pair होता है, एक right side में और एक left side में. Salivary glands 1 pair, this is wrong. Salivary gland 3 pairs होते हैं. And cranial nerves 10, ये भी गलत है. Cranial nerves are 12 pairs. So correct is option number 1. Now last and the 30th question, which one of the following is a sesamoid bone? Now this can be also a star question. Sesamoid bone is patella जो कि ossification of tendons से बनता है, that is ossification of tendons. So correct is option number 2. So that's all for the chapter Locomotion and Movement. These questions were purely from NCERT, so do like the video, share it with your friends so they can benefit from it for the upcoming exam of Neet 2021, and please help the channel to grow by subscribing it. Till the next video comes, take care.